Okay everyone, so in this video we will study about Kirchhoff's law, Wheatstone bridge and its application. So first we will take Kirchhoff's rules. Okay. So Kirchhoff's have given this rule to solve the complicated circuits. Normal circuits in which we have only one resistance or a battery and cell, they can be simply solved by using Ohm's law. But in order to solve the complicated structures or the circuit diagrams in which we are having a cell, okay, we have a resistance, or we have more than one cell, this is another resistance, or in between that we have another resistor. So in order to solve these kinds of complicated structures, simple Ohm's law and the rules we have done till now was not uh, fully capable to solve these circuits. So Kirchhoff's have given two rules. So before going to these rules, we have to understand three words which will be mainly used in this lesson. First is your junction. जंक्शन इज द मोस्ट कॉमन वर्ड जो हमारे नॉर्मली यूज होता है रेलवे स्टेशन पे. ओके, अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपकी ट्रेन एक साइड से आएगी और उसी ट्रैक पे दूसरी साइड को चली जाएगी. दिस आर नॉर्मल वर्क ऑफ अ ट्रेन, सो इट्स नॉट अ जंक्शन. लेकिन इन बिटवीन अगर आपके पास यहाँ ऐसे कोई रास्ता जुड़ जाए जहाँ से ट्रेन यहाँ से भी आ सकती है या इसके बीच में इस तरफ से भी अगर ये जुड़ जाए, ओके, सो दिस पॉइंट वेयर मोर देन टू lines are joining, this is point is called junction. Okay, so अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, so in this if we give it name as A, this is as B, C, D, this point as E and this point as F. Okay, so in this diagram we are having this one line, second line and the third line. So this point B will be our junction. Similarly, at point E, there are three lines are meeting, so this point will also known as junction. So in this point, sorry, in this circuit diagram, so B and E are two junctions. They are junctions. Okay, so junction means जहाँ आपकी two से ज़्यादा lines अगर meet करेंगी, 3, 4, 5, that can be any, but more than two. Okay, where there are three directions or more than three directions in which the current or we can go, or we can say the three paths are available at this point. So B is a junction, similarly E is a junction. Second point is now is your branch. Branch means it is a, you can say the line between two consecutive junctions. It's our first and this is second. जो complete आपका BAFE, this will be known as one complete branch. Means दो consecutive, okay, junction के बीच का जो आपका path है, that will be known as your branch. So first branch अगर मैं लिखूँ तो it is B, A, F and E. B is your junction, E is our junction. तो E और B के बीच का जो path है, that will be called our branch. ओके, और ब्रांच हमारे पास कौन सी है अगर यहाँ देखें तो दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच. विल स्टार्ट फ्रॉम बी, सो इट इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू सी टू डी एंड टू ई. सो दिस कंप्लीट पाथ विल ऑल्सो बी अ ब्रांच. ओके, और कोई ब्रांच है हमारे पास, सो बी टू ई, दिस इज ऑल्सो ब्रांच. अगर हम इस रेजिस्टेंस का नाम लिख दें, so if this resistance R1, this is my R2 and this resistance is R3. So this BR2E will also represent one branch. So BR2E will also represent branch. So 1, 2 and 3. There are three branches. Okay. Third word is your loop. ओके, क्लोज लूप हमने बहुत बार सुना है, सर्कल, लूप. ये वही मतलब है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो. तो अगर हम पहले लूप की बात करें, सो दिस विल बी आर वन कंप्लीट लूप. दैट इज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू ए टू एफ एंड टू ई and then back to B. So B, A, F, E, B is one loop. Similarly, B, C, D, E, B. B, C, D, E,
B is our another loop. Okay. Do we have another loop? So answer is yes. We are having this complete A, B, C, D, E, F, A. So it is starting from A to B to C to D to E to F and back to A. So there are 3 loops complete. So 3 loops, branch and junction. So junction is where more than 2 lines are meeting, or we can say more than 2 branches are meeting. This is called your junction. Branch is this path between 2 consecutive junctions. So we are having 3 branches here, and loop is one closed path that you will start from this point and you reach back to the same point. That will be called your loop. Okay, so these are junction, branch and loop. If these 3 points are clear, so we can go to the first Kirchhoff's rule. So rule number 1. Kirchhoff's first rule is known as its first rule is known as junction rule. First rule is called junction rule, or another name of this is current rule. Current rule. Okay, so it's a very simple. He says that algebraic sum of the current entering or meeting at a junction is always 0. Okay, so simply is that at junction, if we take a sum total of all the currents which is either entering और leaving a junction will be 0. अगर हम ये मान ले कि जैसे हमारे पास B point था, let's say we only considering this junction point. So there are so many branches are meeting here. So current is coming from this first branch. Let's say it is I1. From here it is going I2 out. This I3 is out. This I4 is also out. I5 is in, and I6 is in. Okay. So sum total of this I1 to I6 will be 0. The sign conventions to be used for this is the current which is entering. Okay, current which is entering the junction will be taken as positive, and the current which is leaving the junction will be taken as negative. Okay, तो अगर हम इसका sum total करें as per this rule, so I1 is entering, so it will be taken as positive. I2 will be taken as negative. I3 is also leaving, so it will be taken as negative. I4 it is also negative. I5 it is positive. I6 is positive, so this is equals to 0. This is what the first rule says, that amount of the current which is entering the junction will be equals to the amount of the current leaving the junction. कि अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि इस जंक्शन पे ओके करंट दोनों तरफ से आ रहा है, वन इज दिस सेल, वन इज दिस सेल. सो अगर यहाँ से आपके पास करंट आ रहा है 10 एम्पियर और यहाँ से आपके पास करंट आ रहा है लेट्स से 5 एम्पियर विच इज मीटिंग एट पॉइंट बी, तो इस तरफ अगर आपका करंट आउट होगा, दिस विल बी सम टोटल ऑफ दीज टू, इट विल बी 15 एम्पियर्स. दिस इज व्हाट द रूल सेज. ओके, कि जितना करंट हमारे जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही करंट हमारा जंक्शन से आउट होगा. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दिस इज आवर जंक्शन पॉइंट 1 and then this is junction point 2, then this point and this point. Okay, so let's say 4 ampere of current is entering from here. 3 ampere of current is entering to this junction point A. This is my junction point 2, this is my junction point 3. So A, B, C are the 3 junction point. Here we have find out current 1.3 ampere is going out. Here we have to find out the current, that how much current is in this branch, and at this area 2 ampere of current is going out. Okay, so this is a problem which may come in 1 marks, that find out the current here, find out the value of I. So we go by the rule that amount of the current entering will be equal to the amount of current leaving. तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 4 plus 3, so here the current is 7 amperes. Okay, 7 is entering, 7 will leave. When it reaches to this point 1.3,
sorry, 1.3 ampere of current is going here. So how much current is left here? So this will be 7 minus 1.3. So it is coming out to be your 5.7 amperes. So 5.7 ampere of current will go to the branch BC. Again there is a junction point. So 2 ampere is leaving here. So how much current is left? So it is minus again 2.0. So it is coming out to be answer is 3.7 amperes. Okay, so this is the distribution of current, and finally we are getting the value of I as 3.7 ampere of the current is left in this branch. So this was the first rule of the Kirchhoff's to find out the value of current, that how the current will move in a junction. So rule is simple, that the amount of current entering the junction will be equals to the amount of the current leaving the junction. So sum total of the current at the junction will be 0. So this was the first rule. Okay, now we go for the second rule. Okay, so Kirchhoff's second rule. Okay, so Kirchhoff's second rule is also known as your voltage rule. Or it is called your loop rule. Okay, so this says that the sum of the change in the potential, okay, sum of the change in potential around any closed loop, okay, in any closed loop is of any closed loop is also 0. Okay, means summation of change in potential over a closed loop when the circuit is also closed. One thing is closed loop and circuit is also closed. Circuit is closed. So change in the potential around any closed loop when circuit is closed will be 0. Okay, so again if we take the same diagram, this was our resistance R1. Okay, then we are having the second cell. This was our resistance R2, sorry R3, and in between there was a resistance R2, R3, and the name was given as A, B, C, D, E and F. Okay, now first of all we have to show the direction of current. So we have to show the first rule first. Okay, so it is positive terminal, current will move from here, it will enter here if the current is I1, and if EMF of this cell is taken as epsilon 1. Okay, these are cell 2 whose EMF is epsilon 2. Again this is a positive terminal, so current will move in this direction, the current is I2. Okay, now B is our junction, so I1 will enter from here, I2 will enter from here. So ultimately how much current will leave from here? Okay, so this will be our current I3, which is equals to I1 plus I2. And in a branch, okay, this point was left to discuss. In a branch the current will remain the same. Okay, branch में हमने discuss नहीं किया था. Whatever the branch is there, if we go by this B to C to D to E, okay, so from B to E the current will be I2. So in here the current will be I3. Now this is also branch from A to B, sorry, B to A to F to E. So branch, so in the branch the current will remain same. So if the current is here I1, so current I1 leave from here. Similarly this B to C to D to E, it's also branch. So if this side the current is I2, so same amount of current will enter to the branch. So this is our first rule. This is a current distribution we have done. Now we have to apply the second rule. For the second rule there is also sign conventions to be followed. Okay, so the first sign convention for this rule says that if you are moving in the direction of the current, okay, that is we are moving from the positive to the
negative, we are moving in the direction of the current. So the product of IR, that is current and resistance, will be taken as positive. Okay, what it means, that if I take a loop, I am taking first my loop as I am starting from point A to B to E to F and to A. Okay, this is my loop. So if I move from A to B to R2, so I'm meeting R2 first. I'm moving in the direction of current, so my product will be I3 R2. This will be taken as positive. Okay, as I'm moving in a direction of current. On the other hand, if I move from, for the same loop, if I move from in the opposite direction we have to go, so we'll move in from A to F to E to B and to A. So now I will move in a direction opposite to that of the direction of the current. If I move from A, cell के बारे में बाद में बात कर रहा हूँ, if we reach to R1. Okay, so current in this loop is I1. Okay, and resistance is R1. So as I am moving in the direction opposite to the direction of the current, so this will be taken as negative. Okay, that's a difference between these two. Okay, we can take any loop, but we have to follow the sign conventions, that if I am moving in the direction of the current, then this product will be taken as positive. If direction of current is opposite, okay, then this will be taken as negative. That is the first rule. Okay, so second, if we are moving in the direction of the current, okay, then if we meet with this cell, so if we meet with the positive terminal first, then this will be taken as positive, and if we meet with the negative terminal first, then it will be taken as negative. Simple. Okay, like I am moving in this from in the direction of current. If I keep on moving in this way and I reaches to here, okay, so if I am moving in the direction of current, then it will be taken as positive. This will be epsilon 1 will be taken as positive. Okay, so these are the two sign conventions to be followed. So now let us solve that these loops, how to write the complete loop. So my loop was A, B, E, F and A. Okay, so I'm moving from A to B, and firstly I'm encountered with R2. I'm moving in the direction of the current, so this will be I3 R2 will be taken as positive. Then I will move from here to here. So now I am also in the direction of the current again. So this is I1, and in the branch current will be I1 and resistance is R1. Again it will be taken as positive. So it is R1 I1. Then I meet with the negative terminal of the cell first. So it will be taken as minus epsilon 1 equals to 0. This is our second rule. Okay, so it means epsilon 1 will be equals to I3 R2 plus R1 I1. Okay, similarly if we go for this loop, okay, let's practice also this loop. Okay, so I am starting from B to C to D to E and to B. Okay, I am starting from here. So I am moving in a direction opposite to that of the current. Okay, so this will be taken as, I first encounter here, so this will be taken as negative. So it is epsilon 2 because I am in a opposite direction of the current. Okay, again I meet R3, so it will be again opposite to direction of the current. Okay, current is moving this way, I am moving in this way, so it will be taken as I2 R3 but with a negative sign. Again I come to this R2, again I am in a direction of opposite. Okay, so this will be minus I3, okay, minus I3, and resistance is R2 will be given as 0. Okay, so this is how loop rule and your current rule are applied in the Kirchhoff's rule. Okay, so we have this was positive. We have come across with the positive terminal of the cell first, so it is positive, then rest will be taken as negative because we are moving in a opposite direction to the current. So these are two rules of Kirchhoff's. Okay, so by using this rule
now we'll study the first application, that is a Wheatstone bridge. Okay, the first application of this rule is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. This rule simply says that if we are having the resistance so connected in the form of a bridge such that bridge is balanced. Okay, तो bridge पहले हम बनाते हैं, फिर देखते हैं balance की condition क्या है. So if we are having these four resistances, here we are having galvanometer, the standard circuit for your Wheatstone bridge. Okay, so we are having four resistances in this way. They are connected to a cell of EMF epsilon. There is a key. So this is first junction point, we can say. This is your point B junction point, this is C, and this point is D. This is galvanometer. Okay, so these resistances are P, Q, R and S. He says that in this rule, they says that Wheatstone bridge is based on the principle that four resistances are placed in such a way that your circuit is now balanced. Balanced means your galvanometer current is 0. This is what the condition for the balanced Wheatstone bridge, that no current is going through this galvanometer. Then if this Wheatstone bridge is balanced, then the ratio of their resistances are equal. P by Q is equals to R by S. This is what you have to write in the exam also, that what is Wheatstone bridge? If the four resistors are arranged in such a way that there is no current is flowing through the galvanometer, then P by Q is equals to R by S. This is what we have to write in the exam about the principle of Wheatstone bridge. Okay, now we have to prove it, whether this is correct or not. So we have to derive this formula. So first of all, now we'll use the Kirchhoff's first and second rule. So firstly, the current rule. Okay, so if this is the current I is going from here, when it reaches to this point, it will be subdivided into two parts. So it will be I1 in this branch, this will be I2. Now I1 current will move from here to here and then again further it subdivided. If we write down the current entering in the galvanometer as Ig, okay, so current here left will be left as I1 minus Ig, and same current will reaches to point C as I1 minus Ig. इसकी distribution होगी. Now from this branch the current I2 will reaches to the junction point D, and the current Ig will also reaches to junction point D. So the current entering the junction point is I2 plus Ig. So same current will leave the junction. So in this branch the current will be I2 plus of Ig. So from here the current is coming out to be I1 minus Ig. From this branch, the junction point C, the current is reaching I2 plus Ig. So total will be current out will be sum total of these two. Ig and Ig will cancel out because here it is minus, here it is plus. So total current is I1 plus I2 which is equals to I. So इस branch में भी current कितना आ रहा है आपके पास? It is again coming out to be I. Okay. So I current ही हमारा यहाँ से बाहर गया था from this cell, and I current ही हमारे पास enter हो रहा है. It means the distribution of current we have done is absolutely right. So first rule apply हो गया हमारा. Now we go for the second rule. Okay, second rule was EMF of the cell, change in the potential will be 0. So if we take first loop as our loop A B D A, okay, A B D A, okay. So now we'll starting from A, we are moving in the direction of the current. So first is I1 P, it will taken as positive क्योंकि हम current की direction में जा रहे हैं. Now we coming to here, current is Ig and resistance is, so the galvanometer is capital G. Then we reach to this junction point and then we move in a direction opposite to current. Opposite to current means now this will be negative. Okay.
So how much it will be? I2 minus, sorry, I2 into R, it is equals to 0. Okay, so let it be equation number 1. Now if we take the second loop, okay, so second loop is our B, C, D, B. On the loop B, C, D and B. Okay, now we apply on this. So from B to C we are in the direction of current, so it will be I1 minus of Ig, resistance is Q, and from C to D we are in direction opposite to current, so it will be negative I2 plus of Ig, resistance is S. Okay, then again from D to B we are in a direction opposite to that of the current, so again the sign will be negative and resistance will be Ig into G, which is equals to 0. Current is Ig, resistance is 0. So it is our equation number 2. Okay, now the value of R is so adjusted that the galvanometer give no deflection, तभी हम मानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है. So Ig की वैल्यू कितनी आ गई? 0. ओके, इफ Ig इज 0, तो अगर हम इसे अप्लाई कर दें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो ये टर्म 0 हो गई. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद I1 P माइनस I2 R इक्वल टू 0. गिव इट इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम 1 हमारे पास ये आ गया. अब 2 में अप्लाई कर दें तो यहाँ I1 ये 0 हो गया, तो क्या रह गया? I1 Q, और यहाँ पे क्या हो गया? Ig इज ऑल्सो 0, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस I2S इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये टर्म भी क्या होगी? 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 3 by 4. So what we get? We are simply getting I1, अगर यहीं में लगा दूं निशान, so it is I1 and I1 cancel out. We are left with P by Q is equals to R by S. So this is our principle and proof of the Wheatstone bridge. Principle is simple, that if four resistances are joined in such a way as shown in the diagram, and if the value of R is so adjusted that in the galvanometer there is no current, means galvanometer current is 0, then the ratio of the resistance of the branches is equal, means P by Q is equals to R by S. This is our Wheatstone bridge. Okay, now we have to do the applications of Wheatstone bridge, जिसके ऊपर आपको mainly exam में questions आते हैं. Okay, so first application of the Wheatstone bridge is your meter bridge. This is very important, और बेटा ये सारी applications आपके practicals में भी हैं. So first we'll take our meter bridge. Meter bridge. Okay, मीटर ब्रिज की बात करें तो इट्स सिंपल, एज द नेम इंडिकेट मीटर. ओके, तो इसमें क्या होता है कि मीटर स्केल लगा है आपके पास, और उस मीटर स्केल के ऊपर एक वायर लगी होती है. मैं इसको ऐसे बनाता हूँ. ये जो आउटर बाउंड्रीज हैं ये आपका स्केल इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो बीच की है ये आपकी वायर इंडिकेट कर रही है कि 1 मीटर की वायर इसमें लगी होती है, इसलिए इसका नाम होता है मीटर ब्रिज. ओके, और मीटर ब्रिज के यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं? देयर आर द पॉइंट्स थ्रू विच वी टेक अ कनेक्शन. ओके, सो इट इज समवट इन दिस शेप, and this point, and finally this is what you have to draw a circuit diagram of the meter bridge. Okay बेटा, अब यहाँ पे आपके कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पर हम जो वैल्यू लगाते हैं बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ये है आपके पास R. ओके, और R हमारी होती है नोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस जो लगती है आपके, वो राइट साइड पे लगती है, एंड दैट इज योर S. ओके, सो ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस. R क्या होती है? नोन. अननोन होती है S. ये भी ध्यान रखना कि आपकी नोन रेजिस्टेंस जो लगती है वो लगती है हमेशा लेफ्ट साइड पे, और अननोन लगती है राइट साइड पे. ये याद रखना, लेफ्ट और राइट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आता है, और क्योंकि उससे आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, उसको हम लास्ट में फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ जो सेंटर में आपका पॉइंट होता है, इससे हम कनेक्शन लेते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से,
और गैल्वेनोमीटर का सेकेंड एंड हमारा जुड़ता है जॉकी। ओके, दैट्स कॉल्ड जॉकी। जॉकी जस्ट लाइक दिस पेन। ओके, इसके साथ आपके वायर लगाते हैं और उसको हम पेन वायर को, उस पॉइंट को हम इस वायर के ऊपर मूव करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कैसे आ रही है। ओके, तो एक हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी आ जाए, जीरो, मीन्स करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो। तब हम मानेंगे कि हमारा बैलेंस्ड है, बिकॉज ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले ही प्रिंसिपल हमारे पास चलेगा। ओके, सो simply you write down this meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. Okay, according to which if current through the galvanometer is zero, means if it's balanced, then P by Q will be equals to R by S. Simple इतना ही लिखना हमने principle में. First is it is based on the principle of Wheatstone bridge, which says that if the Wheatstone bridge is balanced, then P by Q is equals to R by S. तो R और S तो हमें नजर आ रहा है. Where is our P and Q? तो अगर हम इस पॉइंट को मान के लें, इसको ए ही लिखते हैं, और इस पॉइंट पे जहां हम इसको जोड़ते हैं बैटरी के साथ, इसको हम लिखते हैं पॉइंट बी। ओके, सो जो हमारा ए पॉइंट होता है इसको हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं एट अ पॉजिटिव, सो दैट दिस बिकम हाई पोटेंशियल। ओके, एंड इस टर्मिनल को हम जोड़ देते हैं थ्रू की टू द पॉइंट बी, सो दिस बिकम आर लो पोटेंशियल। ओके, इट्स अ हाई पोटेंशियल एंड दिस इज आर लो पोटेंशियल। ओके, और जैसे ही हमारा क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द लेंथ, कि हम इसको यहाँ से टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, आप गैल्वेनोमीटर क्या होगा, पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ देगा। ओके, जब आप इसको पॉइंट बी पे टच करोगे देन इट विल गिव द डिफ्लेक्शन दिस साइड। तो उस समय समझ में आया था कि हमारा सर्किट सही जुड़ा है। नेक्स्ट, अब इस जॉकी को जो है हम इस मीटर ब्रिज के ऊपर मूव करेंगे वायर पे, और वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो, यानी वो स्टेशनरी हो जाए। ओके, ना इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, इट विल बिकम अ स्टेशनरी। सो जो ये ए जे लेंथ आती है, ए टू पॉइंट जे तक की बात करें, इट विल रिप्रेजेंट आर एल, और ये एल रिप्रेजेंट करता है पी को। ओके, और एल विल रिप्रेजेंट पी, तो बाकी लेंथ कितनी बच गई, 100 माइनस एल, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे Q। ओके, सो दिस विल बी P एंड Q। अब ये तो सिर्फ लेंथ हुई, हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। अगर हम ये मान लें कि R इज दी, स्मॉल r इज दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, इफ R इज दी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो P में रेजिस्टेंस कितनी आएगी, LR, और Q में रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 माइनस LR। ओके, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी Q और ये रेजिस्टेंस बनेगी P। अब इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो P की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, LR, Q की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस L इंटू R, विच इज इक्वल्स टू R बाय S। और हमारी अननोन रेजिस्टेंस कौन सी है, दिस वन, दिस इज आर अननोन, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, it's a meter bridge by which we can find out the unknown resistance. Okay beta, so R and R cancel out, हमें वैल्यू निकालनी है S की, so it will be cross multiplied, so result is coming out to be 100 minus L upon L into R. This is the result we use to find out the unknown resistance. Okay, so again I'm repeating this, that meter which is the device which is used on the basis of the Wheatstone bridge to find out the unknown resistance. Okay, it work on the principle of Wheatstone bridge, which says that if galvanometer reading is coming out to be zero, bridge is balanced, so P by Q is equals to R by S. If L is the length at which we are getting null point, okay, then LR will be P and 100 minus L, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हमारे पास रहेगी 100 minus L, this will represent our Q. So ultimately we have this formula that S is equals to 100 minus L by L into R. Okay, so it is the first application of your Wheatstone bridge. Okay, अब second जो application आती है बेटा, that is your potentiometer. Okay, ये भी किस पे काम करता है, this also work on the principle of your Wheatstone bridge. Okay, so next is application is potentiometer. Next application is
पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी देखने में सेम आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, जब यहाँ पे हमने कितनी ली है, जस्ट एक वायर ली है जो 100 सेंटीमीटर यानी इक्वल्स टू 1 मीटर थी, वहाँ पे आपके पास 3, 4, 5 ऐसे वायर हो सकती हैं। सो यानी कि अगर हम बात करें 0 से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 100, यहाँ से शुरू हो जाएगा 101 to 200, so it is 201 to 300, so it is 301 to 400। ओके, तो पोटेंशियोमीटर उसमें मेनली भी डिफरेंस ये रहता है कि इसमें क्या हो सकती है, देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ 400 मीटर, sorry not meter but centimeter, so it can be of 4 meter, 5 meter, 6 meter, it is are made accordingly कि हमें कितना चाहिए। ओके, अब पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल रहता है दैट इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल across any portion of the wire, okay, he said that fall in potential across any portion of the wire, okay, across any portion of wire is directly proportional to the length, is directly proportional to the length of the wire, provided that area of cross section of the wire is uniform, or we can say it constant। okay, कि potential drop across any of your the length of the wire किसी भी point पे it is directly proportional to the length provided area of cross section is constant। इसका मतलब क्या बना कि अगर पोटेंशियल क्या होता है, V is equals to I R, ओके, और R की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, R is रो L by A, इट मीन्स ये क्या बन गया, V is equals to I रो L by A। I करंट जो हमने दिया वो कांस्टेंट है, बिकॉज बैटरी या सेल से देंगे वो कांस्टेंट जाएगा। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वो कभी चेंज नहीं होने वाली, कांस्टेंट। एरिया हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट। सो अल्टीमेटली बचा क्या, सो इट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ प्रोवाइडेड एरिया इज कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म लेंथ, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आपने उसकी 1 मीटर लिया है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जितना भी लिया है आपके पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। सो V इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो ये हमारे पास कांस्टेंट बचता है, और वी कैन राइट डाउन V इज इक्वल्स टू KL, वेयर K इज कमिंग आउट टू बी V upon L। okay, this K is known as potential gradient, K is called potential gradient। तो मैंने को पहले बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पर यूनिट चेंज इन लेंथ पे आपके पास क्या चेंज आएगा। अगर आप 1 यूनिट लेंथ कन्वर्ट करोगे तो हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हम बोल देते हैं, लेकिन पर यूनिट चेंज करने पे कितना चेंज आएगा उसे हम कहते हैं उसका ग्रेडियंट, किसी का भी। यहाँ पोटेंशियल की बात हो रही है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पर यूनिट लेंथ चेंज करने पे कितना आपके पोटेंशियल में चेंज आएगा उसे हम कहेंगे उसका ग्रेडियंट। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू V अपॉन L। दिस इज द पोटेंशियोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस change in the potential or fall in the potential is directly proportional to the length। वर्किंग नॉर्मली इसकी वही रहेगी जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पे किया था, बैलेंस वो तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, सो पोटेंशियोमीटर की भी 3 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में है। पहला, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस by using the potentiometer, then we will compare the EMF of the two cells, and third we will use the potentiometer to find the internal resistance। ओके, तीनों ही बहुत सिंपल हैं और आपको मेनली इसके फॉर्मूलाज ही याद करने हैं और सर्किट डायग्राम, तीन ही चीजें हमने एग्जाम में लिखनी होती हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल, वो हमने कर लिया, सेकंड इज योर सर्किट डायग्राम, एंड थर्ड द फॉर्मूलाज। ओके, सो पोटेंशियोमीटर का एज आई टोल्ड यू द डायग्राम विल बी समवट सेम एज वी हैव डन। सो दिस इज माय पॉइंट A, ओके, सो दिस इज माय पॉइंट B। ए पॉइंट को हम जोड़ते हैं हमेशा बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल के साथ। सो A इज connected to the positive terminal of the battery, then we are having ammeter, positive side is here, negative,
positive. Then we are having a resistor R. This can also be rheostat in some other cases. अगर variable चाहिए तो ठीक है, वरना हम constant use करेंगे. In this case we need a constant, so it is our key K. Okay, then we go to the terminal B. Okay, so B is our low potential, A is at high potential. Then we are having at A in parallel we will connect the resistor R1, then the cell of EMF epsilon 1. This is a key K2. Okay, this is end, and then from here we will use, this is point D, we will use the galvanometer, and this galvanometer is connected to jockey. और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केल जैसे हमने पहले बनाया था 0 से लेके 100 तक. और अगर 1 वायर है, 2 वायर है, 3 वायर्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्केल के ऊपर वायर्स लगी होंगी. ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द योर potentiometer. So first application we are discussing to find out the potential difference of the potentiometer is to find the potential difference. Potential difference. Okay. So what we will do first, we will just close the key K and we will touch the jockey to point A and then to point B. अगर हमारा गैल्वेनोमीटर कंप्लीट डिफ्लेक्शन देता है एक तरफ इस तरफ, और जब B पे टच करते हैं तो उस तरफ, तब हम मानते हैं कि हमारा सर्किट डायग्राम सही है. ओके, सो वी विल हैव सेट द पोटेंशियल हायर देन द पोटेंशियल ऑफ द सेल. ओके, तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा जो इस सर्किट में पोटेंशियल हमने ऑलरेडी दिया है वो सेल से ज़्यादा है. अब हम क्या करेंगे, देन विल क्लोज द की K2, देन विल मूव दिस जॉकी to the different positions so that we get the zero galvanometer reading. Okay, we will यहाँ से R की हम वैल्यू एडजस्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर में से गैल्वेनोमीटर में जो हमने जॉकी को अटैच किया है by using the jockey will find out the R null point जैसे हमने पहले करना था. And let's say the null point is coming out to be at the length L. Okay, so as per the principle V will be equals to KL. Okay, कि अगर L हमारा यहाँ पे लेंथ पे आपके पास क्या आ गया, null point आ गया, तो as per the rule this will be V is directly proportional to the potential drop is directly proportional to length, so this will be VKL. That will be question number 1. And we know that कि अगर सेल, ये जो हमने लगाया है सेल, अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है ऑफ दिस सेल, जिसका EMF हमने लिया है एप्सिलॉन, ओके, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, अगर R है और रेजिस्टेंस ऑफ द और लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज L. ओके, तो हमें पता है करंट के लिए हमने रिलेशन ड्राइव किया है, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन R रेजिस्टेंस दिस प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना आ जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर विल बी I इंटू R. I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज एप्सिलॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. अब वो फर्दर मल्टीप्लाई हो गया आपके रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के साथ. ओके, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, दैट इज फॉल इन पोटेंशियल. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. ओके, तो K की वैल्यू कितनी है, K इज आर फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन R बाय R. ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई पर यूनिट लेंथ, तो L से डिवाइड हो गया. ओके, तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई. इस वैल्यू को हम अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. ओके, क्योंकि ये हमारा क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जितना हुआ था पर यूनिट लेंथ, अगर उसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, R पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एप्सिलॉन R बाय R इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय L. ये तो होगी वैल्यू K की, फर्दर मल्टीप्लाइड विद L. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ओके, now the second application of the potentiometer is to compare the EMF of the two cells. It's very simple. यहाँ हमारे पास क्या था, सिंगल सेल था. अब अगले केस में हम क्या करेंगे, सेम सर्किट रहेगा. ओके, अब हम सेल 2 यूज करेंगे.
ओके, सो विल यूज द टू वे की, जहां हमने वन वे की यूज की थी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ विल यूज दी टू वे की। ओके, तो जहां हमने यहाँ एक सेल ज्वाइन किया था सर्किट के साथ, वहां पर हम क्या करेंगे, टू सेल्स। ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड एप्लीकेशन इज टू कंपेयर the EMF of two cells. Comparison of EMF of two cells. ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा, दैट V is equals to KL. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, वही लिखना है. सेकेंड पार्ट, नाउ टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. ओके, सो इफ दिस इज माई पॉइंट A, ओके, and this is my point B of the potentiometer, जिसके बीच में हमने यहाँ क्या लगा रखा है, scale. okay, which will move from 0 to 100 depending on कितनी wires हैं. A will kept as the higher potential. okay, then we have ammeter in series, it is negative, positive, variable resistor, that is a rheostat. okay, then it is connected to the key, then back to the point B. So ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका. ओके, सर्किट डायग्राम. देन द सेकंड पार्ट, नाउ फ्रॉम हियर वी विल हैव द टू सेल्स. सो सेल 1, सेल 2, these will be connected with the two-way key. okay, so here we are having two-way key. okay, we can connect from here. अगर हमें सेल 1 को कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे की इंसर्ट करेंगे इस गैप में, बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट 1, 2 एंड पॉइंट 3. तो अगर हमने सेल 1 को ज्वाइन करना है तो 1 और 2 को क्लोज करेंगे. सेल 2 को अगर हमने क्लोज करना है तो 2 और 3 में हम की को इंसर्ट कर देंगे. नेक्स्ट पार्ट यही, की के साथ हमारा क्या जुड़ता है, गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू द जॉकी. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम. अब सेम प्रिंसिपल रहेगा. पहले हम क्या करेंगे, हमने अगर इसको कनेक्ट किया और हम ये मानते हैं कि अब हमारा फर्स्ट जो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, इट इज कमिंग आउट द, for the cell 1 the neutral point is coming out to be at the length L1. तो हमारे पास क्या बनेगा, इसकी EMF कितनी आएगी, that will be K L1. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसके बीच में की इंसर्ट करेंगे, इस सर्किट को ओपन, ये सर्किट क्लोज, और हम ये मानते हैं कि इसकी एप्सिलॉन 2 जो आ रही है दैट विल बी एट लेंथ किसी और पे आएगी. लेट्स से इसके 60 पे आ रही है तो उसकी 260 पे आ रही है, 360 पे आ रही है. ओके, दूसरा जो हमने सेल यूज किया वो 150 पे आ गया या 250 पे आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम L1 और L2 निकाल लेंगे. नाउ फिर जस्ट सिंपली डिवाइड दिस, सो इट इज एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2. दिस इज द फॉर्मूला टू कंपेयर द EMF. आपको एग्जाम में बस यही तीन चीजें लिखनी है. फर्स्ट द प्रिंसिपल, दैट इज V इज इक्वल्स टू KL, सर्किट डायग्राम, एंड देन दीज टू. ओके, सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द EMF ऑफ द सेल. मेनली आपको इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, सर्किट डायग्राम और numericals. okay, so the last application of the potentiometer is, to find the internal resistance of the cell. Third application is to find internal resistance of the cell. Again, first is principle. So principle में हमारे पास वही आएगा, that potential drop across any length is at any point of the wire is directly proportional to the length provided area of cross section is constant. So first we'll write down the principle. Second step is now again is our circuit diagram. So in this again the same, first part will remain the same. This is point A, this is point B. Here we are having a scale. Okay, so we can show the scale in this way. Our scale start from 0 to 100. Point A is kept at a high potential. Then we are having ammeter, negative, positive. Then we are having a rheostat, which is variable resistor connected to the key. Okay, and then this is point B at low potential through the key. Key is K1. Okay, it was my point A and point B. अब हमने क्या करना है? We have to find out the internal resistance of the
cell. Okay, so we connect the cell of EMF epsilon. Okay, then in parallel we connect a resistance box R. Then we are having here the key, that is K1, okay, to the negative terminal. Then from here we are again having a galvanometer which is connected to the jockey J. This is the circuit diagram. Okay, so now in this case what we do firstly we close the key K1. Okay, we will close the key K. Okay, there are two keys, one is K1, another one is K. So firstly we will close the key K and we will try to find out the null point. So again, if the null point is coming out at, let's say the length is L1, so we have epsilon as K L1. EMF हमारे पास ये आ जाएगी, सिंपल. Okay, now K is the potential gradient across the wire, हमें मिल गया. अब what we'll do in the second step, we'll close the key K2 and again we'll try to find out the neutral point. And if the neutral point is coming out to be at length L2, then our terminal potential will be K times L2. So this is our equation number 1. Equation number 2, this is we are getting when we close the key K1. Okay, तब हमारे पास किस लेंथ पे आ रहा है? This is coming at the length L2. Again, if we divide these two, this is the EMF of this cell. Now we are having this terminal potential, so it will be L1 by L2. Okay, give it equation number 3. अब हमें पता है, again we know that if the resistance of this cell is small r, okay, and the EMF was epsilon, तो हमारे पास small r, that the resistance of the cell का formula था epsilon minus v by v into r. ये हमने derive किया हुआ है पिछले यूनिट में. Okay, so this can be written as epsilon by v minus 1. इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, okay, so it is r. अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर यूज करें तो epsilon by v की वैल्यू हमारे पास क्या है? L1 by L2 है. So r is coming out to be L1 by L2. Instead of epsilon by v, we can write on L1 by L2 minus 1 into r. So this is the formula to find out the internal resistance of the cell. Okay, so these are the applications of the potentiometer. Okay, so from the Wheatstone bridge, I'm just writing down the formulas which we have derived. That from the Wheatstone bridge, the first formula by using the Wheatstone bridge, that if Wheatstone bridge is balanced, then the formula was the four resistances will be in the same ratio, that P by Q, ratio of the resistance will be equal. By this we have done the first application by using the meter bridge to find out the unknown resistance S, which is coming out to be 100 minus L by L into R. Then we have done the three applications of potentiometer by which use the basic principle of Wheatstone bridge. So first formula to find out the potential. So the first formula to find out the potential, that is coming out to be V is equals to epsilon R plus small r into R L by L, where L is the length of the wire. Okay, so it is the EMF of the cell, resistance of the resistor, small r represent the resistance of the cell. Second formula was simply to compare the EMF of the cell, so it was epsilon 1 by epsilon 2 is L1 by L2, and third is we have done to find out the internal resistance, and that formula is coming out to be L by L2 minus 1 into R. So this is all about the Kirchhoff's law, Kirchhoff's rules. By that rules we have done a Wheatstone bridge, and then by using the Wheatstone bridge we have its four application. That first, to by meter bridge we'll find out the internal resistance, and then by using potentiometer there are three applications. Okay, the basic principle of potentiometer is V is equals to KL, that is fall in the potential is directly proportional to the
length provided area of cross section is constant. So there are three applications to find out the potential, to compare the EMF and to find the internal resistance of the cell. Okay, हाँ एक छोटी सी चीज और रहेगी, that is called the sensitivity of the potentiometer. ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, that what do you mean by sensitiveness of the potentiometer and how it can be increased. So last thing is sensitiveness. Sensitiveness of potentiometer. So sensitive of potentiometer means, the word sensitive means is very sensitive, means वो छोटी छोटी चीज भी चुप जाती है. मोस्ट कॉमन वर्ड वी यूज इन आवर डेली लाइफ. तो वहां भी मतलब सेंसिटिवनेस का यहाँ भी वही मतलब है, दैट ये छोटी से छोटी चेंज को भी मेजर कर सकता है. सेंसिटिव मीन्स द स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड. अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखनी हो, सो इट मीन्स the smallest potential difference can be measured. The smallest potential difference can be measured. यही मतलब है, मतलब छोटी से छोटी भी जो चेंज होगी वो भी हम इसे मेजर कर सकते हैं. नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, हाउ द सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, सो हमारे पास सेंसिटिविटी क्या है. ओके, दैट कैन बी इंक्रीज बाय, फर्स्ट यू कैन जस्ट सिंपली अगर एक लाइन में लिखना हो, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर तो 1 मार्क्स में आता है तो आप सिंपल लिख सकते हो, दैट इट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब फर्दर वो अगर आपसे पूछ ले हाउ द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज, सो मोस्ट स्पेसिफिक वी कैन राइट डाउन, इट कैन बी इंक्रीज बाय, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, के इज योर वी अपॉन एल. ओके, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग length. Okay, and second is, अगर आप वायर की लेंथ को फिक्स्ड कर दो, ओके, सो अगर हम सेंसिटिविटी को बढ़ाना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग द करंट. अगर फिक्स्ड लेंथ है, हम लेंथ के साथ कोई चेंज नहीं कर सकते. इफ वी हैव फिक्स्ड लेंथ, देन सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय decreasing the current. Okay, नॉर्मली क्वेश्चन आपको हमेशा 1 मार्क्स में ही आता है. ओके, सो यू कैन प्ले द स्मार्ट गेम. फर्स्टली, if just he asked you that how we can increase the sensitivity of potentiometer, so you can just give the answer that it can be increased by decreasing potential gradient. अगर वो आपसे स्पेशली क्वेश्चन ये पूछ लेता है how by length affect the sensitivity of the potentiometer, so it is by increasing the length the sensitivity will be increased. Okay, तो ये अलग क्वेश्चन बन सकता है. थर्ड क्वेश्चन बोल सकता है कि if the length of the potentiometer is fixed, how you can decrease or increase its sensitivity. तो अगर आपने इंक्रीज करनी है तो करंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज, और अगर आपने इसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना है तो दिस विल बी इंक्रीज. तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको इसी से बनते हैं और बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं. अब तो वैसे ही हमारे पास 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, फिलअप्स हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज योर किरचॉफ्स रूल्स, इट्स एप्लीकेशंस. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू solve the numericals based on these formulas. Okay, so that's all for this.